force constant. If you take a solid in the form of a wire, or you can take a spring even. This is a wire and this is a spring. Okay, you have wire of different material. Different material means their force constants are different. Different material means their Young's modulus of velocity will be different. Different material, Young's modulus will be different, force constant will be different. Okay, and in case of the spring also, its force constant will be different, Young's modulus will be different. Okay, when you produce stretching here, you attach weight and there is a elongation. That elongation, let us suppose, is E. E is the elongation. Means this was the original length, and then when it is stressed, it takes this shape, and from here to here, this is the elongation. And if you take wire, initial wire with the initial length L, okay, then you apply weight, then wire gets stressed. You can denote this also by E or by small l. Small l is stretching, small l is elongation, small l is increase in length. Okay, so wires are made of different material. Different means they have different Young's modulus and they have different force constant. The force constant means when you stretch it, the force which is responsible for this stretching from here to here, stretching, okay, this is proportional to stretching. More stretching, you need more force. Okay, that means elongation or stretching is directly proportional to the force applied, or force which you want to apply will depend upon how much stretching you want, how much elongation you want in the wire or in the spring. So they are described by their character. That character is described by the force constant. And if you look at this, you apply some constant in this case, okay, then K is called force constant. And K will be given by F by L. Unit will be Newton per meter. Dimension formula will be M L0 T minus 2. Newton per meter will be the SI unit of force constant. Dimension for formula force constant will depend upon F and L. Okay, force has the dimension formula ML T minus 2, and you have to divide it by L. It is elongation. Okay, so it has the dimension of L. So you will get, this is the dimension formula, this is the unit, and this is how you introduce K in the stretching. And K is numerically F by L. That means the force constant. But what is force constant? Force required for unit elongation. Force required to stretch the wire by 1 centimeter or by 1 meter. You have to decide which system you follow, CJ system or SI system. The unit elongation means either 1 centimeter or 1 meter, depending upon the system which you are dealing with. So therefore, force constant, which is the force which is required for producing unit elongation, is given by F over L or F over E. If you represent elongation by E, if you have a solid, not a linear solid, it is a 3-dimensional solid, then every substance is made up of atom. Okay, atoms are located at a certain distance. Normally, that distance you denote it by R0. This is normal distance. Normally, in a solid, atoms are located at this distance. Okay, this is called normal distance. And when you stretch, that means you are increasing this distance. Okay, the change in this distance means you are increasing or decreasing the spacing between two atoms. R is actually interatomic gap or interatomic distance, R0, this one.
Okay, and when you have this much distance, normal distance between the atom in a solid, then there is no attractive force, no repulsive force. There is a total equilibrium and the system is in the minimum energy state. No attractive force, no repulsive force. Okay? So when you apply some deforming force and you want to increase or decrease the length, you want to produce elongation or contraction in a solid which is in the form of a wire, then we express elongation by small l. And in case of solid, when you produce elongation, 3-dimensional elongation, okay, then we will say okay, elongation is E. In case of solid, you change the interatomic distance. Okay, the normal distance is this much, and you want to change the distance, you have to apply deforming force. And how much distance you want to change, that will decide how much deforming force you require. Okay, and if that solid is elastic, then within the solid, after the removal of deforming force, a restoring force will be produced. Actually, what happens? These forces they are electrostatic forces or electromagnetic forces. Means every substance is made up of atom, though atom is electrically neutral, but still it has positively charged particle inside the nucleus and electrons revolving around the nucleus which are negatively charged. Okay, and force between the charges is given by Coulomb's law. And when you increase or decrease the distance, that force depends upon distance between the two charges. That obeys inverse law, F proportional to 1 over R scale. Okay, and when you are changing R, that means you are changing F also, inversely proportional. Increase the distance, force will become less. But that equilibrium will get disturbed on changing the distance. Okay, so the charges on the atoms, charges inside the solid will get disturbed. Okay, and then when you increase the distance, remove the deforming force, then attractive force, that is the restoring force, that will bring the atom to their normal distance. Similarly, why? Because when you have increased the distance, then there will be some attractive force. This negative force is attractive and this positive force is repulsive. I told you the atomic model of velocity. Okay, this is a graph between force between the atoms and the interatomic distance between the atoms. The normal distance is this much. Okay, force variation is as shown in the graph. When you increase the distance, attractive force will be produced within the body. And when you decrease the distance, you make the distance less than R0, repulsive force. The repulsive force or the attractive force, they will be responsible for elasticity. So this is how you define elasticity on the basis of atomic model. Okay, so the force constant will be different for different substances. Force constant is elongation, force required for unit elongation. The force constant is force divided by elongation. The force upon elongation, that is force constant, SI unit, dimension formula. Okay, so now you are dealing with a solid which is in the form of a wire, or you are dealing with a three-dimensional solid, which are 3-dimension length, breadth, thickness. Okay, and you are reducing any type of stain, volumetric stain or longitudinal stain, or you produce shearing stain. So depending upon what type of stain you have developed, so you have different force constant and different coefficient of elasticity. Coefficient of elasticity, stress upon stain. General formula, coefficient of elasticity is stress upon strain. Okay, if you take Young's modulus of elasticity, then you have to take stress force upon area, then strain will be longitudinal. Then this constant, coefficient of elasticity, will be replaced by Young's modulus of elasticity. That means this Y will be stress upon longitudinal strain, change in length, original length.
Change in length means elongation. You can represent it by E or you can represent it by small l, change in length. Okay, so this will give you F over A L by L. So here Y inversely proportional to L. Y is inversely proportional to elongation. Substance which for same value of deforming force, substance which get more elongation will have less value of Y, means will be less elastic. So that's why you on the basis of this equation you can decide which substance is more elastic, which is less elastic. So out of steel and rubber, I told you, in case of steel there will be less elongation for the same force, whereas a rubber will get more stretching for the same force. So more stretching means less Y. The rubber is less elastic than steel. Okay. Now if you take a second type of stain, then the constant will be K or B. It is stress upon volumetric stain. Stress upon volumetric stain. We generally put minus sign over here. Minus sign means when you apply pressure, force upon area is pressure also. Okay. So this bulk modulus of velocity generally we talk about in case of gases, in case of liquids. Okay. Gases are compressible, liquids are compressible, solids are compressible, but if you take an ideal liquid, not compressible. You cannot change the volume of ideal liquid. They don't like any type of compression. उन पे एक्स्ट्रा प्रेशर डालो, जितना मर्जी प्रेशर डालो, वो कंप्रेस नहीं होते, उनकी वॉल्यूम नहीं चेंज कर सकते अगर लिक्विड आइडियल है. ओके. और अगर सॉलिड आइडियल है, आइडियल मीन्स रिजिड है, तो भी दुनिया की सारी ताकत लगा दो, डिफॉर्मेशन नहीं पैदा कर सकते. तो फिर मुझे ये बताओ कि आइडियल सॉलिड के लिए यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी. I give you two answers, 0 or infinity. This wire is made up of a rigid material. A rigid substance means you apply force on any magnitude, you cannot change any of the configuration, no change in length. That means change in length is 0 in case of ideal solid, in case of rigid solid. If this is 0, so what will be the value of Y? Infinity. Okay. So therefore we have got one conclusion that for rigid solids the value of coefficient of velocity is 0. No, 0 or infinity is infinity. Change in volume is 0, change in length is 0. You cannot produce even shearing stain. Okay. Stress by stain is coefficient of velocity and stain is 0 in case of ideal liquid or in case of ideal gas or in case of ideal solid, rigid solid. Okay, the denominator is 0, so naturally the fraction will be infinite. The coefficient of velocity in general for ideal liquid or for rigid solid is infinite. Okay, means Y is infinite, bulk modulus of velocity. बी आर के जो इसको हम इससे डिनोट करते हैं, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम आप पैदा नहीं कर सकते. लिक्विड अगर आइडियल है तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 होगा, तो उसका जो बल्क मॉडुलस है वो भी इनफाइनाइट होगा. समझ में आ गया. तो ये अगर आप थर्ड टाइप का स्ट्रेन लेते हैं, मॉडुलस ऑफ वो जो आप स्ट्रेन लेते हैं शीयरिंग स्ट्रेन, तो तब ये जो कांस्टेंट है वो डिफरेंट होगा. दैट विल बी स्ट्रेस डिवाइडेड बाय shearing stain. Shearing stain. That is, this is stress. Shearing stain is represented by angle of shear. Told you the line which was originally perpendicular, when you apply sideways force, it gets turned through some angle. This type of stain without change in volume, without change in length, there is only change in shape. Okay, that stain is called shearing stain. Okay, and for shearing stain, the coefficient of velocity is denoted by eta. Eta is coefficient of modulus of rigidity. This is Young's modulus of velocity. This is bulk modulus of velocity. You can denote it by K or B. And this is
modulus of rigidity when you have produced shearing strain in a solid. Got my point? So you have three types of constant: Young's modulus, bulk modulus, and modulus of rigidity. Clear? So if you take solid in the form of a wire is supposed to be cylindrical in shape. This is wire. Let us say A is the area of cross section of this wire, L is the original length, and it is fixed at this support. There is a rigid support over here. Then you apply some deforming force, and there will be change in the length, there will be elongation. Let us say elongation is small l. Clear? This is the elongation, this is the original length, and here the deforming force is equal to the weight which you have attached to the free end of this wire. Okay? Let us say y is the coefficient of, y is the Young's modulus of elasticity, coefficient of elasticity y, and you define y as stress divided by strain. Clear? Y is equal to stress by strain. If you consider that this wire on stretching will remain within elastic limit, it will not switch over to the plastic region. Okay, it will obey Hooke's law, and within elastic limit you are applying deforming force and you are noting the extension. And if you plot a graph between extension and the force, this force is actually the load which you have attached to the free end. Okay, it is deforming force is in the form of load, and this is the extension. And the solid is within elastic limit, stretching is within the limit. The graph will be straight line, stress strain curve will be straight line. Okay. Now if you are given four wires and you plot a graph between load and extension for four different type of wires made of different material, having different y, different force constant. Okay, let us say the graphs are for material A, for material B, for material C, and for material D. Four wires, different material, made up of different material. They have different y. And when you plot a graph between load and extension, do you get straight line graph for every type of material within elastic limit. Now you have to decide from the graph out of these four wires which is maximum elastic, for which wire y has got the maximum value. How will you find out? Take the help of Hooke's law. This is Hooke's law. Okay, the graph is between F and L, and you know F is proportional to L. F is equal to K into L. K is the force constant, deforming force per unit elongation. Okay, to make use of this and this to find out from this graph out of these four wires of different material which is maximum elastic, which has got the maximum value of Young's modulus. So how to find it from the graph? Okay. Now, there are two variables f and l. If you take the slope of graph, slope will be, slope is dy by dx. Clear? So, slope is also tan theta. If theta is the angle made by the graph A for material A. Okay? So, this has got the least value of theta, and this has got the maximum value of theta, and B and C they have in between. Okay, so how tan theta will be slope, it will be dy by dl, df by dl, or f by l. Okay, f by l will give you slope. Okay, so
making use of this relation, okay, and this relation, slope is maximum for D. Tan theta is maximum for graph D, minimum for graph A, and in between for B and C. Clear? Now tan theta is going to decide F by L. It's going to decide slope. To find out F by L from this graph, from this relation, y is equal to F over A, L over L. You want F over L. Is this. Okay? So F over L will be Y A L. Okay? Now suppose all these 4 wires made up of different material, they have same dimension. Same dimension means same area of cross section, same length, same area of cross section, same length, dimensions are same. Then it will mean A and L are same for all the 4 materials. So this will be, F over L will be directly proportional to Y. Okay, and F over L is tan theta. Tan theta is slope, and slope is directly proportional to Y, and the D graph has the maximum slope. Therefore, Young's modulus of velocity will be maximum for D, where D, made up of material, has got the maximum value of Young's modulus of velocity. It's most elastic. Clear? ये ऐसे डिसाइड करते हैं ग्राफ से. समझ में आया कि नहीं? हुक्स लॉ ये है, और ये लोड और एक्सटेंशन ग्राफ है, स्ट्रेट ग्राफ आ रहा है, सिंगल मटेरियल के लिए है. यहाँ यू हैव बीन गिवन 4 मटेरियल्स, 4 वायर्स मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल, and you want to decide from the graph which is most elastic. Okay, so you find out the slope of the graph. Slope is dy by dx. In this case, f by l or df by dl. That is the slope. Okay, and slope is tan theta also. Theta is the angle which this graph will make with L axis. The slope will be maximum for that which has more angle of inclination with the L axis. So maximum theta for D, to maximum tan theta for D, maximum F over L for D, and maximum Y for D. So where D has got the maximum, the highest value of coefficient of velocity. Clear? Okay. Now, from this load extension curve, this force has produced this much elongation. So how much work has been done? How much work is done? Work done generally is force multiplied by displacement. In this case, work done will be force into displacement. This is force, this is displacement. फोर्स इंटू जितना आपने वायर को खींचा है, खींचने में ही तो वर्क हुआ है, और वायर कितना खींचा गया इतना, तो वायर को इतना खींचने के लिए जो आप फोर्स लगाया है वो तो ये लोड है, ये फोर्स ये है फिजिकल टू mg, ये लोड है, इसके कारण इतनी लॉन्गेशन हुई है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, इसी ने वर्क किया है, डिफॉर्मिंग फोर्स ने वर्क किया है. और रिस्टोरिंग फोर्स वर्क करेगा जब उसको रिस्टोर कराएगा. अभी तो डिफॉर्मिंग फोर्स ने इलॉन्गेशन पैदा किया है, उसने वर्क किया है. तो वर्क जनरली होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ दिस मच इलॉन्गेशन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज नॉट कांस्टेंट. जैसे पावर टेस्ट करने वाला होता है ना, बुल वर्कर उसको बोलते हैं, उसमें स्प्रिंग लगा होता है कि किसके अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ज़्यादा पावर है, वो उसको कंप्रेस करता है ऐसे. जो ज़्यादा कंप्रेस कर पाया उसकी पावर ज़्यादा है. लेकिन जब वो कंप्रेस करना शुरू करता है ना, पहले तो झटके से यहाँ तक ले आता,
इतना कंप्रेस कर दिया, अब थोड़ा सा करो और कंप्रेस, बड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। अब एक स्टेज आ जाती है और फोर्स लगता नहीं है और कंप्रेशन आती नहीं, ठीक है ना। इसका मतलब शुरू में तो आपने बड़े आसानी से कंप्रेशन पैदा कर दी, ओके, और जब फर्दर कंप्रेशन थोड़ी सी भी, बड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा। दैट मीन्स इस प्रोसेस में जो फोर्स जो आप लगा रहे हैं, जो डिफॉर्मिंग फोर्स आप लगा रहे हैं, वो कांस्टेंट नहीं है। तो इसलिए हमें एवरेज फोर्स लगाना पड़ेगा। शुरू में कितना फोर्स, फाइनली कितना फोर्स, दोनों का मीन लेना पड़ेगा, वो फोर्स यहाँ आएगा, ओके। तो इसलिए यहाँ एक फैक्टर आ जाएगा हाफ। जब फोर्स कांस्टेंट ना हो प्रोसेस में, तो फिर हम एवरेज की बात करते हैं, तो एवरेज फोर्स लेते हैं। तो अब यहाँ वर्क आ जाएगा हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन। तो वर्क का ये फार्मूला बन गया, वर्क इज़ हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन, ओके। और ग्राफ से अगर ये वर्क निकालना हो, ग्राफ से ये हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन, हाफ इंटू एफ इंटू एल कैसे आएगा? यू टेक द एरिया अंडर द ग्राफ, मान लो दिस मच इज द इलोंगेशन, इतनी इलोंगेशन है, एंड फ्रॉम दिस टू दिस इज द ग्राफ, द स्टेट ग्राफ, लोड proportion to extension. तो एरिया अंडर दिस ग्राफ विल बी इक्वल टू हाउ मच? It gives you a triangle, ना? तो एरिया विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू एल इंटू हाइट इज फोर्स। तो दिस विल बी, वर्क विल बी एरिया अंडर लोड एक्सटेंशन ग्राफ. From the graph, even graph between load and extension, from the graph you can find out how much work is done in a particular extension. That is area under the graph. It's half into base into height. That comes out to be same, half into L into F. हो गया? Half into load into extension is work. Mathematically and graphically, area under the graph between load and extension, area under the load extension graph will give you work done in stretching. तो वो वर्क कहाँ गया? Work is never wasted. Work done by the system or on the system is stored in the system as one of the forms of energies. Work is never wasted. Physics says work done by the system or work done on the system is never wasted. It becomes the energy of the system in one way or the other. So therefore, जो work in stretching, that is half into load into extension. Okay, and this is area under load extension curve. So we want to express this work in terms of the physical quantity stress and strain. तो कैसे? Half F, you divide numerator and denominator, you multiply by A in the numerator and denominator. It will not make any difference in the equation. Okay, then into this L. What is this? This is stress, force upon area. Okay, this is A. No, this is L. No, you want to express this work in the form of stress and strain. So for strain you need small l over capital L. So you divide this by capital L, multiply this by capital L. It will make no difference. And this comes out to be strain. Therefore work done will be half into stress into strain. And what is this term? A into L. A into L. Wire was supposed to be cylindrical. A was the area of cross section, L was the length. So what will give you A and L? Cross section area into L. Wire is supposed to be cylinder. Volume of the cylinder is base area into height. Base area into height, A into L, pi r square into H. अब H यहाँ लेंथ है,
पाई आर स्क्वायर एरिया है, तो एरिया इंटू लेंथ तो वॉल्यूम आ गया। किसका वॉल्यूम आया? वॉल्यूम ऑफ द वायर। वायर इज सपोज टू बी सिलेंड्रिकल, ठीक है। तो ये आ गया वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वायर। तो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ द वायर। ओके, एंड दिस वर्क इज energy stored. This is the energy stored in the stretched wire. वायर को जब स्ट्रेच किया, वायर को स्ट्रेच किया, फोर्स लगाया, एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई, वर्क किया, वो वर्क वायर के अंदर उसकी एनर्जी बन के बैठ गया। और जैसे आपने डिफॉर्मिंग का फोर्स हटाया, रिस्टोरिंग आया, उसको रिस्टोर कराया, ठीक है ना। जैसे बो एंड एरो है, आपके पास धनुष है, आप तीर उस पर रख देते हैं, तो क्या तीर आगे जाता है? नहीं जाता, क्योंकि आपने वर्क तो किया नहीं, एनर्जी तो है ही नहीं उसमें, सिर्फ रखा ही है। फिर उसको खींचते हैं, खींचने से क्या होगा? आपने वर्क किया ना, फोर्स लगाया, उसको खींचा, तो जो वर्क किया ज़्यादा खींचो और ज़्यादा खींचो और ज़्यादा खींचो, तो वो जो एरो है और ज़्यादा दूर जाएगा और किसको हिट करेगा? ज़्यादा फोर्स से करेगा। तो जितना आप जोर लगा रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं स्ट्रेचिंग में, वो उसकी एनर्जी बनता जा रहा है। और जब उसको छोड़ेंगे, वो जितना ज़्यादा आपने खींचा है, उतनी ज़्यादा वर्क आपने किया है, उतनी ज़्यादा एनर्जी उसमें स्टोर हुई है, और उतनी दूर वो जाएगा और उतना ज़्यादा फोर्स से वो हिट करेगा। गॉट माय पॉइंट? तो ये जो वर्क किया, वर्क एनर्जी एक ही बात है, देयर इज ए वर्क एनर्जी थ्योरम। यू परफॉर्म वर्क, इट विल रिजल्ट इन द चेंज इन द एनर्जी। F इज इक्वल टू, you have this relation, F is equal to minus du by dr. F into dr is work in changing this much interatomic gap. जब वायर को खींच रहे हैं तो इंटरटॉमिक गैप बढ़ गया ना, नॉर्मल डिस्टेंस नहीं ना रहा। ओके, डिफॉर्मिंग फोर्स ने डिस्टेंस को, इंटरटॉमिक डिस्टेंस को थोड़ा बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया? इतना। किस फोर्स ने इतना डिस्टेंस बढ़ाया? एफ ने वर्क किया, एफ इंटू आर, एंड दैट कॉज चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। एनर्जी बढ़ गई, ठीक है ना। आपके पास एक मजदूर आता है, 100 रुपये उसकी जेब में है, आप उसको कहते हैं यार ये नीचे ना एक ट्रक आया ईंटों का, 4000 ईंटें छत पे चढ़ानी है। कहता है मैं चढ़ा देता हूँ, मैं 500 रुपये लूँगा। जब आया था उसकी जेब में 100 रुपये था। जब उसने वो वर्क किया, 4000 ईंटें छत पे चढ़ाई, उसने वर्क किया मजदूर ने, और हमने उसको 500 रुपये दे दिया। अब उसकी जेब में कितना हो गया जाते समय? 600 हो गया। एक 100 से 600 हो गया, 500 रुपये इंक्रीज़ हो गया। क्यों भाई? उसने वर्क किया ना, वर्क किया ना उसने। तो उसके वर्क ने क्या किया? उसका अमाउंट चेंज कर दिया। पहले जेब में 100 रुपये था, अब 600 कर दिया। वेस्ट थोड़ी गया उसका काम। तो यहाँ भी फिज़िक्स में जब वर्क किया जाता है तो वर्क सिस्टम के अंदर उसकी एनर्जी बन के बैठ जाता है। ओके, तो ये है एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। इवन इफ यू कंप्रेस द स्प्रिंग, अगेन यू हैव टू अप्लाई फॉर यू, अगेन यू हैव टू डू वर्क। जब आप उसको कंप्रेस करेंगे, फिर छोड़ेंगे उछल के, क्योंकि उसको गुस्सा आ रहा है, आप उसको कंप्रेस कर रहे हो। कोई कंप्रेस होना नहीं चाहता। अगर सॉलिड रिजिड होता तो किसी की हिम्मत नहीं, दुनिया की सारी ताकत ले आओ, अमेरिका को भी बोल दो, रशिया को भी बोल दो, अलाइड फोर्सेस इकट्ठी कर दो कि यार इसको कंप्रेस कर दो। ये वो कहता है ये तो रिजिड एंड हीट है, ये नहीं कंप्रेस होने वाला। ठीक है, थ्योरेटिकली हम कहते हैं, प्रैक्टिकली तो ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी स्टोर्ड हो गई। ये एनर्जी स्टोर्ड वायर के अंदर हुई। वायर की इतनी वॉल्यूम थी, तो बड़ी द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी स्टोर्ड, उसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, दैट विल बी इक्वल टू स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। ये वॉल्यूम को आप इधर ले आओ। इतनी वॉल्यूम में इतनी एनर्जी स्टोर्ड हुई, तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो आइटम आई, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, इसको एक नया नाम दिया गया, एनर्जी डेंसिटी।
ये टोटल एनर्जी स्टोर्ड है, इसको हम यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल यू। कैपिटल यू इज़ एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रेस्ड बाय, टोटल एनर्जी स्टोर्ड। एंड जो स्मॉल यू है दैट इज़ एनर्जी डेंसिटी, दैट इज़ एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। क्लियर? उसका फार्मूला क्या आ गया? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इज एनर्जी डेंसिटी। Energy density means energy stored per unit volume. This energy was stored in the whole body, in the whole volume. Energy stored per unit volume, the energy density, that is half into stress into strain. Okay? So you can express these two items in different way. How? Energy density U is equal to half into stress into strain. Let us express energy density in terms of the coefficient of elasticity, Young's modulus of elasticity. Okay, so how to bring Young's modulus in this formula? You have Young's modulus of elasticity as stress divided by longitudinal strain. Stress by strain, that is Young's modulus. Now if you want to eliminate strain, to get the value of strain from here, strain will be stress divided by Young's modulus. To eliminate this, so you will get energy density half into stress upon Young's modulus, which means energy density will be half stress whole square divided by Young's modulus. So another form of energy density. Similarly, you can eliminate stress, you can express stress in terms of Y. So then this energy density will become half into stress into strain, and Y is equal to stress by strain. From this, stress will be Y into strain. Stress will be Y into strain. So if you replace this stress by this, so energy density will be half into strain whole square into Y. Same formula can be expressed in different ways. Okay, there are three physical quantity involved here. One is stress, another is strain, then another is Y, Young's modulus. So you can eliminate any of the three. Okay, to express energy density, you can express it in terms of stress only, in terms of strain only, in terms of Y only. Okay, acha. Next, now this elongation has been produced by stretching force. You can produce this elongation by making use of heat energy also. Suppose you have a wire of length L, okay, and then this wire is of length L at temperature T1. Everybody has got temperature. Human body has got fixed temperature. Even if you take the temperature of chair on which you are sitting, it will also have some temperature. Okay? There is thermodynamics में one law कि 0 Kelvin temperature in this universe is impossible. Everybody has got temperature above 0 Kelvin. Okay? 37 degree means you add 273, you will get temperature in Kelvin. Much more than 0 Kelvin. So 0 Kelvin temperature is impossible. Okay? This is the third law of thermodynamics.
कि 0 केल्विन टेम्परेचर अटेन किया ही नहीं जा सकता। 4 केल्विन तक पहुंच गए, 11 केल्विन तक पहुंच गए, 4 तक पहुंच गए, 0 तक केल्विन पर पहुंच ही नहीं सकते। ओके, 0 केल्विन टेम्परेचर इम्पॉसिबल है, इसलिए हर बॉडी का टेम्परेचर है। तो आपने ये सॉलिड लिया इन द फॉर्म ऑफ वायर, उसकी ओरिजिनल लेंथ आपने L ले ली, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A ले लिया, क्लियर, टेम्परेचर T1 ले लिया। अब इसको हीट किया, हीट करने से क्या हुआ, इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पैदा हो गया, लेटरल स्ट्रेन भी पैदा हुआ। जब ये वायर एक्सपेंड करी तो पतली भी हो गई, लंबी हो गई, पतली भी हो गई, लेटरल स्ट्रेन भी पैदा हुआ और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी पैदा हुआ। ठीक है, तो यहाँ इतनी लेंथ थी, इतनी बढ़ गई, दिस इज चेंज इन लेंथ। व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस चेंज इन लेंथ? इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इज T2। तो व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर? Change in temperature is T2 minus T1, final temperature minus initial temperature. And what is the change in length? Change in length, that is delta L. अब कैसा भी कह सकते हैं, पहले लेंथ L1 थी, बाद में L2 हो गई, L2 माइनस L1, ये चेंज इन लेंथ है। इसको डेल्टा L बोलो या आप स्मॉल l बोलो, या अभी आपको बताया था स्मॉल ई इलोंगेशन। लेकिन ये जो इलोंगेशन है ये थर्मल इलोंगेशन है, हीट के कारण इतना इलोंगेशन हुआ है। ओके, जब ये जो प्रोसेस चल रही है ये थर्मल स्ट्रेस है या थर्मल फोर्स आपने लगाया है, हीट यूज़ की है, थर्मल फोर्स, थर्मल स्ट्रेस, थर्मल फोर्स। थर्मल व्हाट मीन्स इट इज़ रिलेटेड विद हीट। हमने मैकेनिकल फोर्स नहीं लगाया खींचने के लिए, हमने हीट को यूज़ किया है। ओके, हीट एनर्जी है, एनर्जी हैज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। व्हाट टाइप ऑफ वर्क यू वांट हियर? वी वांट इलोंगेशन, वी वांट एक्सटेंशन, वी वांट एक्सपेंशन, वी वांट इंक्रीज इन लेंथ। दैट यू कैन डू बाय अप्लाइंग मैकेनिकल फोर्स आल्सो और बाय मेकिंग यूज ऑफ हीट एनर्जी आल्सो। So therefore you have produced a stain produced is change in length over original length, change in length over original length. Okay, if you fix this wire on both sides, either rigid support, and you heat, and you don't want any stain, you want zero stain. आपने जो वायर के एंड्स हैं वहाँ रिजिड सपोर्ट लगा रखी है, इसको एक्सपेंड नहीं होने देना, इसको रोकना है। हीट एनर्जी कह रही है कि वायर में हीट दे रही हूँ, तुम एक्सपेंड कर जाओ। वो कहते हैं ये जो मेरे एंड्स पे जो सपोर्ट लगी है रिजिड है, मेरे को एक्सपेंड नहीं करने दे रही। हमने बोला कौन रोक रहा है? बोला थर्मल फोर्स। यहाँ से एक फोर्स लगाना पड़ेगा आपको, इधर से भी और इधर से भी, जो इस एक्सपेंशन को रोकेगा। ओके, नहीं तो एक्सपेंशन तो पक्का है। थिंक दे एक्सपेंड ऑन हीटिंग, दे कंडक्ट ऑन कूलिंग। ऑन हीटिंग और ऑन कूलिंग देयर विल बी सम टाइप ऑफ स्टेन, expansion or contraction, that is a cause of stain. Lekin we don't want stain, that's why we have put rigid support at the two free ends of the wire, and we are heating, we are supplying heat energy, and wire wants to expand and we want to stop expansion, so we have to apply force from the ends, and that force is the thermal force जिसने heating force का मुकाबला किया है। हीट एक्सपेंशन चाहती थी और इस फोर्स ने उसको नहीं होने दिया। ओके, उसने मुकाबला किया, इक्वल अपोजिट। हम ये भी नहीं चाहते कि फोर्स इतना लगाओ कि ये कंट्रैक्ट कर जाए, हम तो कहते हैं ओरिजिनल लेंथ इसकी रिटेन होनी चाहिए, ना ये एक्सपेंड करे ना ये कंप्रेस हो, ना कंट्रैक्ट करे। तो कितना फोर्स साइड से लगाए, वो फोर्स वही होगा जो थर्मल एक्सपेंशन को रोकेगा, तो उसको थर्मल फोर्स बोलेंगे। ओके,
तो it has been practically observed the change in length is directly proportional to original length. जितनी ओरिजिनल लेंथ ज़्यादा होगी हीट करने से एक्सपेंशन भी ज़्यादा होगी। वायर की लेंथ अगर कम है तो उसमें, ठीक है ना, आप एक पेन लेते हो 5 रुपये का, 7 में बेच देते हो, 2 रुपये प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। 2 पेन खरीद लिए 5 के 10 रुपये बेच दिया उसको 14 में, प्रॉफिट बढ़ गया। क्यों कि पेन आपने 2 बेचे। अब आप ज़्यादा पेन बेचो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब एक पेन से आप ज़्यादा प्रॉफिट कैसे ले लोगे? तो जितनी लंबी वायर होगी उसको हीट करोगे उतनी ज़्यादा एक्सपेंशन होएगी। तो इट इज़ ए प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन कि चेंज इन लेंथ मीन्स एक्सटेंशन मीन्स एक्सपेंशन इन दिस केस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। नंबर 1 दिस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकंड, change in length is directly proportional to change in temperature. Keep on heating and you will find there will be expansion, more and more expansion. ओके तो इतना हीट करना है कि इलास्टिक लिमिट में रहे, एक्सपेंड ना करे, कंट्रैक्ट ना करे और मेल्ट ना करे, अपनी स्टेट ना चेंज करे। हीट बहुत शरारती है, इसको 2 काम भगवान ने दिए। क्या कि किसी का टेम्परेचर चेंज करना हो तो बिना हीट के नहीं होगा, और किसी की स्टेट चेंज करनी हो, सॉलिड से लिक्विड बनाना हो, लिक्विड से वेपर बनाना हो तो वह हीट चाहिए। आइस भी बिना हीट के वाटर नहीं बन सकती और वाटर भी बिना हीट के स्टीम में चेंज नहीं हो सकती। तो चेंज ऑफ स्टेट इज काज्ड बाय हीट, ओके, एंड चेंज ऑफ टेम्परेचर इज आल्सो बिकॉज ऑफ हीट। और यहाँ हम क्या चाहते हैं, हमने हीट दी है, हम स्टेट चेंज नहीं करना चाहते, सॉलिड सॉलिड ही रहेगा, इसका लिक्विड नहीं बनाना, मेल्ट नहीं कराना, और विद इन इलास्टिक लिमिट ही इसको हमने हीट करना है और इसको एक्सपेंशन से रोकना है। थर्मल फोर्स चाहिए उसको रोकने के लिए, हमने साइड से रिजिड सपोर्ट लगा रखी है और वहाँ से फोर्स मिल रहा है, वायर को एक्सपेंशन से रोका जा रहा है। अदरवाइज जो चेंज इन लेंथ आनी थी वो ओरिजिनल लेंथ पे डिपेंड करनी थी। इसकी लेंथ हमने एल ले ली, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए ले लिया, वॉल्यूम ए इंटू एल ले लिया, ओके। और इसका जो ये नेचर है वो किस मटेरियल की बनी है हमें उसका वाई पता है, ओके। ये इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है और एक इसकी थर्मल प्रॉपर्टी है। थर्मल प्रॉपर्टी है कि जल्दी एक्सपेंड करेगी, ज़्यादा एक्सपेंड करेगी या कम करेगी। ये गुड कंडक्टर है कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है ना। हीट करने से ज़्यादा एक्सपेंड, कई तो हीट करने से बहुत जल्दी ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं और कोई बहुत ज़्यादा हीट करने से बहुत कम एक्सपेंड करते हैं। कहीं में एक्सपेंशन ज़्यादा है, कहीं में रेट ऑफ एक्सपेंशन डिफरेंट एंड डिफरेंट मटेरियल। वो कौन डिसाइड करता है कि किसका रेट ऑफ एक्सपेंशन ज़्यादा है? अब किसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है वो तो वाई डिसाइड करेगा, लेकिन किसका रेट ऑफ एक्सपेंशन ज़्यादा है कि कम है, जो हीट से ज़्यादा एक्सपेंड करती कम एक्सपेंड करती है, उसके लिए भी कांस्टेंट है, वो सॉलिड की नेचर पे डिपेंड करता है, वो अल्फ़ा है। ये अल्फ़ा है, कांस्टेंट है। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करो ना, चेंज इन लेंथ विल बी प्रोपोर्शन टू एल एंड चेंज इन टेम्परेचर, और एक आप यहाँ कांस्टेंट लगाएंगे, दैट कांस्टेंट इज अल्फ़ा। ये अल्फ़ा है। जैसे स्ट्रेस प्रोपोर्शन टू स्ट्रेन कांस्टेंट लगाया वाई, और यहाँ चेंज इन लेंथ प्रोपोर्शन टू ओरिजिनल लेंथ प्रोपोर्शन टू चेंज इन टेम्परेचर, और कांस्टेंट लगाया अल्फ़ा। अल्फ़ा का एक नाम दिया गया है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। Coefficient of thermal expansion. This will decide the expansion is faster or slower for the same change in temperature for different materials. अब कॉपर ले लो, सिल्वर ले लो, अल्मोनियम ले लो, डिफरेंट मेटल्स ले लो, सेम की ओरिजिनल लेंथ सेम ले लो, सबका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम ले लो, सबको सेम हीट सप्लाई करो, सेम चेंज ऑफ टेम्परेचर कराओ, तो कौन ज़्यादा एक्सपेंड करता है कौन कम एक्सपेंड करता है अल्फ़ा बताएगा, ओके। तो अल्फ़ा एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसको कोएफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन बोला गया है। और अल्फ़ा की वैल्यू आप देखो डेल्टा एल ओवर एल, अल्फ़ा इज डेल्टा एल ओवर चेंज इन टेम्परेचर, दिस इज अल्फ़ा, ओके। नो अल्फ़ा इज
delta L over L into change in temperature. From this, if you find out the stain, change in length over original length. This is a longitudinal stain in terms of alpha. Delta L over L will be alpha into T2 minus T1. So this is alpha into T2 minus T1. Okay. This is thermal stain. Stain caused because of thermal energy, because of heating. And if you find out the same stain, longitudinal stain, on applying mechanical force, तो वो क्या आता है? You have y is equal to stress over strain. Strain ये है delta L over L. Stress by strain is y. Now you express this in terms of y. So here delta L by L will be this item. Will be, निकालो इसकी वैल्यू, that is F over AY. This is the longitudinal strain caused by deforming force, mechanical force, and this is the same longitudinal strain but caused by heating. This is thermal strain, this is mechanical strain, longitudinal strain. Equate these two. You have caused a strain by different method, mechanically or thermally, खींच के या गर्म करके सेम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पैदा किया है. तो इसलिए दोनों चीज़ें सेम है. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर आप इक्वेट करें आपको क्या मिलेगा? हाँ, डेल्टा L over L in terms of alpha it is this, and delta L over L in terms of Young's modulus it is F over AY. Equation 1, equation 2 equate करो. तो F over AY is alpha T2 minus T1. Now F over A, that will be Y into alpha into T2 minus T1. This is called thermal stress. Thermal stress. F by A. This force is developed mechanically or thermally. गर्म करके फोर्स डेवलप करो, उसमें जो एक्सटेंशन करा दे, बिना फोर्स के तो चेंज इन लेंथ नहीं ना होगा. तो जो एनर्जी है इट हैज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क. हमने हीट एनर्जी को रिक्वेस्ट किया कि भाई इतनी एक्सटेंशन चाहिए, इतना स्ट्रेन पैदा करना है इसमें. उधर हमने मैकेनिकली डिफॉर्मिंग फोर्स को रिक्वेस्ट किया भी सेम आपने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पैदा करनी है, सेम मटेरियल, सेम स्ट्रेन वी वांट बाय टू डिफरेंट मेथड्स. ओके, तो हम ठीक है, हमें सेम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मिल गया, इक्वेट किया. एफ ओवर ए को हम स्ट्रेस बोलते हैं, पर ये स्ट्रेस जो है थर्मल स्ट्रेस है. एफ ओवर ए इज इक्वल टू वाई अल्फा T2 माइनस T1. और व्हाट इज़ द थर्मल फोर्स? जिस फोर्स ने इसको एक्सपेंशन से रोका, नहीं तो इतनी एक्सपेंशन आनी थी, इतनी स्ट्रेन पैदा होनी थी, लेकिन इसने रोका. तो ये है थर्मल फोर्स. थर्मल फोर्स विल बी, एक उधर ले जाओ, F इज इक्वल टू वाई ए अल्फा T2 माइनस T1. T2 minus T1. So this is thermal force, this is thermal stress. Alpha and Y both are related to each other. One is Young's modulus of velocity, another is coefficient of linear expansion. Okay, and they are related to each other. Relation is F is equal to YA alpha T2 minus T1. This force is this force which has stopped expansion. That expansion was due to heat. That was thermal expansion. And this thermal force has opposed that thermal expansion. रोका है उसको, नहीं होने दिया. ओके, तो वो थर्मल फोर्स है
और ये थर्मल स्ट्रेस है, ये दोनों आपस में, इसमें अल्फ़ा और वाई दोनों आपस में रिलेटेड है। ओके, नो लेट अस से कि यू हैव two different wires of different material, different dimension. For example, this is wire, let us say, made of copper. Then you have another wire made of, let us say, silver. Length is L1, length is L2. Okay, and coefficient linear expansion alpha 1, alpha 2, area A1, area A2, Young's modulus Y1, Young's modulus Y2. Two different linear solids have been attached to each other in series. Okay, and you get a composite, composite length, composite length. ये L1 थी, ये L2 है, टोटल लेंथ L1 प्लस L2 हो गई। अब आप इसको हीट करते हैं या इस दोनों को खींचते हैं तो बराबर थोड़ी खींचेंगे, उनका अल्फ़ा भी डिफरेंट है। दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल, दे हैव डिफरेंट लेंथ, डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डिफरेंट नेचर, डिफरेंट अल्फ़ा, डिफरेंट वाई। ओके, बट दे आर यूज्ड टू मेक ए कंपोजिट लेंथ, दोनों को सीरीज में जोड़ दिया। ठीक है जी, फिर टेम्परेचर चेंज किया, दोनों का सेम। यहाँ चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1, इसका भी T2 माइनस T1, दोनों को सेम टेम्परेचर चेंज किया है। ओके, अब यहाँ थर्मल फोर्स क्या होगा? थर्मल फोर्स इन दिस केस जो इनकी एक्सपेंशन को रोके, यहाँ आप रिजिड सपोर्ट लगा दो, इधर भी और इधर भी, यहाँ से इसको एक्सपेंड नहीं होने देना, ये फोर्स लगाएंगे। ओके, वो किस पे डिपेंड करेगा? अभी आपने देखा चेंज इन लेंथ, मान लो इसकी चेंज इन लेंथ जिसको आप डेल्टा L1 बोलें, चाहे ई बोले, इलोंगेशन ई लिख लो, स्मॉल एल लिख लो, डेल्टा एल लिख लो, दोनों में सेम एक्सपेंशन नहीं होगा, दोनों डिफरेंट मटेरियल की बनी है, दोनों की एरिया डिफरेंट, मोटी पतली, ठीक है ना, लेंथ भी डिफरेंट, एक छोटी एक बड़ी, नेचर भी डिफरेंट, एक कॉपर एक सिल्वर, ठीक है ना, लेकिन टेम्परेचर सेम। ओके, अब इन दोनों को बढ़ने से रोकना है, थर्मल फोर्स लगाना, कितना लगेगा कंपोजिट पे? ठीक है, यहाँ देखो, अगर इसकी लेंथ चेंज होती है तो किस पे डिपेंड करेगी? अल्फ़ा, अब देखो ना, जो स्ट्रेन पैदा हुआ डेल्टा एल बाय एल क्या था? अल्फ़ा इंटू T2 माइनस T1, ठीक है ना। तो इसमें जो चेंज इन लेंथ आएगी, क्योंकि इसकी ओरिजिनल लेंथ भी डिफरेंट है, अल्फ़ा भी डिफरेंट है, सिर्फ ये चीज़ सेम है, तो क्या आएगी? अल्फ़ा 1 L1 T2 माइनस T1। दिस विल बी expected increase in length due to heat, due to thermal expansion। दूसरे की आप L2 बोल दो, डेल्टा L2 बोल दो, अल्फ़ा उसका डिफरेंट है, लेंथ उसकी डिफरेंट है, लेकिन दोनों को सेम टेम्परेचर से हीट किया गया। ओके, अब टोटल लेंथ इनका सम होगा ना, L1 प्लस L2, इतना ये खींची, इतना वो खींची। अगर हम ना रोकते तो टोटल एक्सपेंशन L1 प्लस L2 आनी थी, ठीक है ना, लेकिन हमने तो उसका एक्सपेंशन को रोकना है, हमें थर्मल फोर्स चाहिए, ऐसा फोर्स जो दोनों के अंदर एक्सपेंशन को ना होने दे। दोनों तड़फ रही हैं एक्सपेंशन के लिए, क्योंकि गर्म की जा रही हैं और हीटिंग से एक्सपेंशन होगी पक्का, और हमने उस एक्सपेंशन को रोकना है तो साइड से हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। हमने किनारों से उसको फिक्स कर दिया है, वहाँ एक फोर्स डेवलप होगा जो दोनों को बोलेगा कि मैंने नहीं एक्सपेंशन होने देनी। वो कहते अगर तुम ना होते तो ये कहती है मैंने इतना एक्सपेंड करना था, ये कहती मैंने इतना सपने ले रहे थे, मैं इतनी एक्सपेंड करूँगी, इतनी गर्म होने पर इतनी महंगा एक्सपेंड करूँगी, हम दोनों मिलकर इतना एक्सपेंड करेंगे। सपनों पे पानी फेर दिया थर्मल फोर्स ने। मैं नहीं एक्सपेंशन होने दूंगा,
थर्मल फोर्स कह रहा है, दोनों में से किसी को नहीं होने दूंगा। ये नहीं कि एक के साथ भेदभाव करूँगा। तुमने जो सपने लिए मैं इतनी एक्सपेंड करूँगी, मैं इतनी एक्सपेंड करूँगी, मैं ज़ीरो एक्सपेंशन कर दूँगा। ये थर्मल फोर्स कह रहा है, हम ढूंढ रहे हैं वो फोर्स किसके बराबर है, ठीक है ना। तो वो फोर्स ये है, वो फोर्स ये है, भी फार्मूला लिख लेने दो। पहले की जो चेंज इन लेंथ α1 L1 T2 माइनस T1 प्लस α2 L2 T2 माइनस T1, ओके, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ जो इसको रोकने के लिए आपको फोर्स चाहिए, उसमें L1 ओवर Y1 A1 प्लस L2 ओवर Y2 A2. For this composite wire made up of two different material having different length, different area, different nature, different thermal expansion, कोई ज़्यादा एक्सपेंड कर सकती है, कोई कम, कोई ज़्यादा इलास्टिक है, कोई लेस इलास्टिक है, उनका वाई अलग है, उनका कोफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन अलग है, बट दे हैव बीन मेड टू फॉर्म ए कंपोजिट वायर एंड दे आर हीटेड, both are heated by the same temperature, and we are in search of which force can stop this elongation. That is the thermal force required is α1 L1 T2 माइनस, ये यहाँ से आया है, ये एक्सपेंशन इसकी है, ये टोटल एक्सपेंशन है, ओके, टोटल एक्सपेंशन। और ये देख, ये टोटल लेंथ है, उतनी रखना चाहते हैं, ओके। तो ये फार्मूला आ गया। लेट अस सपोज कि हम ये A1 और A2 बराबर ले लेते हैं, दोनों की मोटाई सेम, थिकनेस सेम ले लेते हैं, लेंथ बेशक अलग है, नेचर बेशक अलग है, वाई अलग है, अल्फ़ा अलग है, एक तो टेम्परेचर सेम, दोनों का चेंज इन टेम्परेचर सेम, और हमने एक स्पेशल केस ले लिया कि दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम, ठीक है, थिकनेस दोनों की सेम है। तो फिर क्या होगा, अब यहाँ A1 को भी A लिख देंगे, A2 को भी A लिख देंगे, दोनों को हम A लिख देते हैं, तो ये कहाँ जाएगा, थर्मल फोर्स विल बी ये α1 L1 T2 माइनस T1 प्लस α2 L2 T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय L1 ओवर Y1 प्लस L2 ओवर Y2, और यहाँ जो A है वो यहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में है ना, एलसीएम ले लोगे ऊपर चला जाएगा। तो अल्टीमेटली यू विल गेट दिस एज ए थर्मल स्ट्रेस फॉर ए कंपोजिट वायर।